Hi there guys, today I'm going to give you a very quick review of this palette which is from Anastasia Beverly, and this is my favorite palette of my all collections I own. So let's get into the video without any further ado. So this is the look of this palette. It has all the colors available, I guess everyone needs. अगर ख़ास तौर पे आपकी शादी हो रही है या फिर कोई इवेंट आने वाला है और आप डिफरेंट पैलेट्स पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आई वुड से कि नो टू लाइक क्वांटिटी बट ओवर दिस आई थिंक यू नीड ओनली दिस पैलेट, क्योंकि इससे आप बहुत सारी लुक क्रिएट कर सकते हैं. द हैवी वन, द ऑफिस लुक एंड लाइक कैजुअल वाली लुक भी कैरी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से. बहुत लाइट मेकअप भी कर सकते हैं और बहुत बोल्ड और हैवी मेकअप भी कर सकते हैं. As you can see, they have this transition shades and Asian brown colors जो कि हम लोग की स्किन पे बहुत सूट करता है. एंड these two are the highlighting shades and the fairy shade is my favorite. ये inner corner पे बहुत खूबसूरत लगता है. and these three are the metallic colors और ये सेंटर लिड पे बहुत खूबसूरत लगता है. इफ़ यू यूज़ इट विद द सेटिंग स्प्रे तो वो और पॉप करता है और बहुत खूबसूरत लगता है. द ब्राउन्स कलर इज़ माई फेवरेट कलर इन ऑल. and look at this brush. It comes with this brush and I would say you don't need so many brushes if you have this palette, because मैं मोस्टली हर लुक इसी ब्रश के साथ करती हूँ. इवन दिस इज नॉट इवन वॉश प्रॉपरली. एज यू कैन सी द पिगमेंट इज कमिंग आउट. सो मैंने इसको वॉश भी नहीं किया हुआ क्योंकि मैंने लास्ट से जो लुक क्रिएट की थी. लेट्स डू दी swatches. This is Tempera. Look at this shade. And now the glistening. Look at the shades. This is super soft and super blendable. This is orange soda. This is rose pink, which is a metallic color. Look at this. Look at this. Super pigmented. Super pigmented. Ignore the voice coming from outside. Look at this slutty color. And now comes to the my favorite shade, which is browns. This is my favorite shade in all of these. I love using this color. And now the mulberry shade, which is usually a cranberry color shade. Now the dusty rose, the next row. Okay, the fairy. I love this in my inner corner. The burnt orange, the sienna, now look at the rustic shade. Look at this color. Now cypress umber and noir. Look at this deep black. Also, one thing I want to share is these two colors are little too hard to blend. Otherwise बाकी सारे बहुत soft है, but these are soft also, but थोड़े से different texture है as compared to all of these, all of the others. These two are little different. So what I do is just spray a little amount of setting spray and just dip in it, and you can see the difference. See this is without setting spray and this is with the setting spray. You can see the difference. Now let's do this.
with the brush. See the difference? That's why I use my finger, because the color pops a lot more than the brush. I hope you guys like my video, and do let me know in the comment box कि आपको और किस चीज़ का review चाहिए, and what else you want to know about this palette. Okay, till then, Allah Hafiz.